Okay, so we're starting off on this month's module. So this month, what we are going to be doing is this is the November module. And what we'll be doing now will be Simpson's rules. We'll be doing Km, then angle of lol, and grain calculations. Grain stability. These are the 4 topics that we'll be covering in this module, in this month. So I'm starting off with the KMT first. Both of these, rather all the 3, actually we are going to be doing from nutshell. ब्लर आ रहा है सबके लिए ब्लर है? Yes sir. Yes, sir. Yes थोड़ा sir. ब्लर है। हाँ सर ब्लर है। Yes sir, ब्लर है। Okay, just a sec. मेरे को जरा हाई डेफिनेशन में चेंज करने दो जरा। सर अभी क्लियर है। बेटर है सर बट राहुल का है बट इट इज ओके Okay. All right. So these 3 topics we'll be doing from Nutshell, Volume 2. These 3 topics from Nutshell, Volume 2. So I'm starting off with KMT. After KMT, I'll be going on to angle of lol. And then I'll switch over to the bigger one, which is Simpson's rules. So पहले KMT से शुरू कर रहे हैं. Grain calculations, obviously, we'll be doing it from Hinship. This is from Hinship. Okay. So let's begin with, I'm doing chapter 19 of my book. That is calculation of Km and Km curves. इसमें Km curves भी है. The Km curves is not in our syllabus. So ये हम नहीं करेंगे. But calculation of Km is very much in our syllabus. So we'll concentrate on calculation of Km. All right. So let's begin. What are the formulas that we'll be using? I've already been using some of them last month, so it'll be a repetition for most of you. So the first one is, if I have a log like this, सर ब्लर ही दिख रहा है।
ब्लड दिख रहा है? ये सर बहुत ज्यादा ब्लड दिख रहा है। हाँ सर कुछ पढ़ नहीं पाते सर। Okay, all right. Just a sec. Let me try once again. ब्राउजर में इश्यूज आ जा गए। मतलब ड्राइंग दिख रही है सर, लिखा हुआ मेकआउट करना पड़ रहा है। Okay, got it. Let me just try once again with my mobile. So we're talking about a log which is floating in water, and so this is the water line. So the log is of length L and breadth B, and she is floating in water of draft delta. So therefore, the underwater volume will be L into B into D. Yes. Okay. If this be the keel, then can you tell me what will be the KB? D by 2, sir. So D by 2. Okay. So KB will be D by 2. So this is the center of buoyancy. This becomes the KB, और ये D by 2 हो गया. The BMT is IT by V, moment of inertia transverse divided by underwater volume, and moment of inertia transverse for a rectangular water plane is given by the formula LB cubed by 12. Moment of inertia transverse for a rectangular plane please mute it. LB cubed by 12. If I put LBD in it, what I get is B square by 20. आई थिंक सर कैमरा थोड़ा पीछे कैमरा सर थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा सर, वो नीचे का बोर्ड दिख नहीं रहा सर। Now huh? नीचे वाला सर दिख नहीं रहा सर, आफ्टर एलबी क्यूब के बाद दिख नहीं रहा। अच्छा ये वाला दिख नहीं रहा। Visible. दिख तो रहा है, दिख रहा है सर, कंप्लीट दिख रहा है, उसके नीचे भी दिख रहा है सर। स्टारबोर्ड साइड का थोड़ा सेक्शन बस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है बट ओके वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है वो, हाँ अभी ठीक है। ओके ओके ओके। सो पोर्ट साइड से भी कम कट गया होगा। ओके LB cube by 12 LBD and this is equal to B square by 12D. ये नजर आ रहा है? यस सर। Okay. So the third formula is not visible.
Third formula is not visible. BM. सर अब तो एचडी है एकदम, अब तो हाँ जी? दिखाई देना चाहिए। दिख रहा है सर, दिख रहा है। एचडी है सर, अभी तो एचडी है एकदम। Okay, okay, great. तो आई थिंक लॉग आउट करके लॉग इन करना पड़ेगा। क्यों अभी नहीं नजर आ रहा? नहीं जिसको नहीं आ रहा सर, बस क्लियर है, अब बिल्कुल क्लियर है। स्क्रीन पे आउट ऑफ साइट है वो। हाँ, अच्छा, स्क्रीन पे राइट क्लिक करो, फिट टू फ्रेम, फिर पूरी स्क्रीन दिखेगी। that's exactly what I was trying to tell you at the beginning only. Just right click, fit to frame, and you'll get everything on your screen. There won't be an issue. And you can even rotate your. Then you don't need to do all this. Yes, sir. BMT is equal to IR by V. IT. IT by V. Okay. थोड़ा सर ये ट्रांसवर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन करने के सर। Yeah. So basically, if this be the top view, this is forward, this is aft, this is port, this is starboard. So I'm trying to talk about this view of the ship. This is the view I'm trying to show. So there'll be two axes. One axis which will go like this. And this is the axis which I'm going to show here. This and this are the same. ये ऐसे जा रहा है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, ये साइड व्यू है, ये वाला व्यू, और इसी का ये टॉप व्यू है. This is the axis. So both are the same. This I'm going to call, because it is cutting my transverse side. So ये मैं transverse नाम दे रहा हूं. तो this is the length, this is the breadth. IT, moment of inertia, second moment of waterplane area. If I rotate this waterplane area twice about this axis, second moment, I will get moment of inertia. The side which is parallel to the axis is powered as 1, which is that side length. The length is powered as 1. The side which is perpendicular to the axis is powered as cube, divided by 12. That's the reason why this LB cube by 12 was written here. So this is moment of inertia I transverse, because it is cutting the transverse side. IT. This is moment of inertia transverse. जहां पे एक एक्सिस और होती है, ये वाली एक्सिस. That means ये वाली एक्सिस. अगर इसी एक्सिस को मैं साइड से दिखाऊं, वो कुछ ऐसी नजर आएगी. इस एक्सिस के अबाउट जहाज पिच करता है या ट्रिम करता है. सो इसको कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस. ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है. ये मुझे IL देगा.
the side which is parallel to the axis is powered as 1. The side which is perpendicular to the axis is powered as cube. And therefore, you get BL cube by 12. So IT, IL, दो एक्सेस हैं. ये वाली एक्सेस ये ट्रांसवर्स साइड को कटर कर रही है. इसके अबाउट जहाज रोल करता है तो ये रोलिंग एक्सेस भी कहलाती है. इसके अबाउट जहाज पिच करता है, ट्रिम चेंज करता है, तो ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सेस कहलाएगी. सो लॉन्जिट्यूडनल, it is cutting the longitudinal side. So IL. This is cutting the transverse side. So IT. So IT will give me B square by 12D. Similarly, BML will give me IL by V. Is equal to BL cube by 12 LBD is equal to L square by 12D. Shortcut. So BMT, BML. सर थोड़ा कैमरा नीचे करेंगे सर. कैमरा नीचे करूंगा. दिख रहा है वैसे. आईटी के आगे क्या फॉर्मूला है? Yes sir, yes. यस. IT is LB cube by 12. IL is BL cube by 12. So once I put IT in this formula, LB cube by 12 LBD will give me B square by 12D for a box-shaped vessel. Similarly, BML will give me L square by 12D for a box-shaped vessel. So when we say that the GM of a vessel is 0.3 meters, GM of a vessel is 0.3 meters. T is silent. So it is actually GMT. Yes, sir. T is silent. So it's GMT. Similarly, free surface effect, IDI by W. I, which moment of inertia to use? T is silent. IT. Transverse. Transverse. Because connected with rolling. Transverse. Connected Transverse with stability. transverse stability. So IT. So connected with that. That's the connection between them. So whenever we talk about anything to do with trim, MCTC, we will be talking about L. Because longitudinal stability. Okay. Point number 4. So, are you able to see this side? Are you able to see this side? दिख रहा है? पूरा नहीं दिख रहा. पूरा दिख रहा सर. दिख रहा है सर, दिख रहा है. कुछ सेक्शन. Okay. So फिर मैं इधर से erase कर देता हूँ. सर जो MCTC के फार्मूले में GML होता है, वो सर
यही जीएमएल है सर जो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो लॉन्गिट्यूडनल है. Absolutely right. I'm just coming to Okay. that only now. So your MCTC formula is W into GML upon 100L. This GML is the यही वाला ML जिसकी हम बात कर रहे थे अभी. And this is approximately equal to W into BML upon 100L. This formula is going to be used if kg is given in the question. This formula is going to use if kg is not given in the question. This is a formula for MCTC. So now, what is the use of this? Kb plus Bm is equal to Km. Similarly, Kg plus Gm is equal to Km. Therefore, what do I get? Kb plus Bm is equal to Kg plus Gm. If I'm talking about transverse, then this is transverse. So Kb plus Bmt is equal to Kg plus Gmt. Supposing I'm talking about longitudinal, then Kb plus Bml is equal to Kg plus Gml. So the same equation can be used for either transverse or longitudinal, depending on the orientation what you are looking at. किस orientation में जा रहे हो? अगर इस orientation में जा रहे हो, rolling की बातें कर रहे हो, तो T है. अगर इस orientation की बातें करते हो, pitching की बातें कर रहे हो, या trim change की बात कर रहे हो, तो longitudinal है. So depends on the orientation. So this becomes your crucial formula for you. Is that okay? Yes sir. सर जो लिखा है आपने MCTC को W upon BML divided by 100L. सेकंड फार्मूला सर उसी वाला. सर इक्वल टू और अप्रॉक्स लिखा है सर आपने क्या? ये अप्रॉक्स लिखा है. मतलब दो फॉर्मूला यही है, उसमें एक में केजी है, एक में केजी नहीं है. एक में केजी है, एक में अगर केजी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और जीएमएल निकालना है. अगर केजी मुझे दिया हुआ है तो मैं जीएमएल निकाल सकता हूं बाय टेकिंग द केजी दिस साइड. केबी का फॉर्मूला मुझे पता है d/2, बीएमएल का फॉर्मूला मुझे पता है L²/12d minus the kg will give me GML. और इस GML को मैं इस फॉर्मूले में यूज करके MCTC निकाल सकता हूं. Yes. और वंस एक बारी मेरे पास MCTC आ गया तो मैं ट्रिम चेंज निकाल सकता हूं. वो मुझे फॉर्मूला पता है ट्रिम चेंज का. TC is equal to trimming moment upon MCTC. मैं TC निकाल सकता हूं. एक बार मैंने TC निकाल लिया तो मैं TA भी निकाल सकता हूं एंड देयरफॉर TF भी निकाल सकता हूं. इस सेकंड वाले में सर आपने अप्रॉक्स की मेंशन किया हुआ है सेकंड फार्मूला MCTC के लिए. इसलिए क्योंकि दिस इज द एक्चुअल फार्मूला एंड अगर केजी क्वेश्चन में मुझे नहीं दिया हुआ है तो मुझे पर फोर्स BML यूज करना पड़ेगा. एंड जब मैं BML यूज करूंगा तो जो मेरी वैल्यू आएगी MCTC की, वो मेरी वैल्यू में इन दोनों में हल्का सा भी फर्क आएगा क्योंकि GML और BML में अंतर होगा. तो देयरफॉर मेरी MCTC की वैल्यूज में भी फर्क आएगा. लेकिन जब मैं इस फॉर्मूले में जाऊंगा तो MCTC मेरे डिनोमिनेटर में चला जाएगा. और जब मेरा MCTC डिनोमिनेटर में जाएगा, इस TC के मेरे यूनिट्स क्या हैं?
सेंटीमीटर। करेक्ट, ये मेरे सेंटीमीटर है। सो सपोजिंग मेरा ये जो डिफरेंशियल था जिसकी वजह से मेरा टीसी सेंटीमीटर्स में डिफरेंशियल आएगा, लेट अस से 1 सेंटीमीटर, जब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा डेसिमल विल मूव टू द लेफ्ट, इट विल बिकम 0.01 or 0.001. That will be hardly minuscule. So eventually मेरे ड्राफ्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, because I would have gone to the third. अगर केजी तो समझे, अगर केजी दिया रहेगा तो अगर हम सेकंड फार्मूला यूज करते हैं तब गलत हो सकता है ये। That's right. वो प्रिंसिपल एरर है, तभी तो मैंने खास लिखा है, इस तभी मैंने खास लिख दिया, वो प्रिंसिपल एरर हो जाएगा। So that's how you got to do it. Okay, I'm coming to exercise 15. I'm on question number 10. A ship of displacement 10250 tons, KB 5.6 meters, kg 8.3 meters, floats in salt water. If the moment of inertia about the center line, this axis is also called the center line axis, जिसको मैं transverse का नाम दे रहा था, because it was cutting the transverse side, is also called as center line because ये center line के through जा रही है, तो इसको center line भी कहते हैं. So moment of inertia about center line is 45,000 M4. FSM is 2050 TM. Find the GM fluid. Find the GM fluid. All right. Let's start with KB मुझे दिया हुआ है. Let's start with BM. Let's start with BM. T is IT by V. So let's find out V first. V will be equal to W by density. 10250 divided by 1.025. How much is the V? 10,000. 10,000. So many cubes. Okay, I is given to me already. So calculate BMT. $45,000 M4 divided by 10,000 cubes. How much? 4.5. 4.5. 4.5.
All right. KB plus BMT minus KG will give me GMT. Give me the value of GMT. And this will be GMT solid. 1.8. 1.8. Find out FSC. Find out FSC. 0.2. 0.2. FSM divided by W. 2050 divided by 10250. So GMT solid minus FSC. Find out the value of GMT fluid. Six. 1.6. 1.6. So that's your answer. सर ये BMT कैसे आया था सर वो 4.5? BMT 4.5 कैसे आया? BMT is IT by V. We wrote the formula. Yes sir. IT is 45,000. Yes sir. Divided by V, we found is 10,000. Sir, this V, what is this V, sir? I missed that one. V is underwater volume. V is underwater volume. Okay, sir. Understood. Underwater volume is displacement divided by density. Ah, sir. Okay, sir. So 10250 divided by 1.025 will give me 10,000. Yes, sir. Understood. Thanks. Hanji, any doubts? Any doubts? सर वो सेंटर लाइन वाला क्या बताया था आपने? आई सेंटर लाइन. आई सेंटर लाइन और IT आर द सेम. एक ही बात है. ओके. कई बुक्स या पेपर में सेंटर लाइन लिखा जाएगा, कभी वो ट्रांसवर्स लिखा जाएगा. सो मतलब यू गॉट टू बी क्विक इनफ टू कैप्चर. ये हम बात किसकी कर रहे हैं? हम रोलिंग की बातें कर रहे हैं बेसिकली. तो हम सेंटर लाइन की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं. सर लॉन्गिट्यूडनल में IL ही लिखना पड़ेगा ना? लॉन्जिट्यूडनल में IL आ जाएगा. That cannot be center line. That cannot be center line. That cannot be center line. वो गलत हो जाएगा, वो प्रिंसिपल एरर हो जाएगा. Yes sir. ठीक है, इज दिस ओके? ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस वाला था, ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडनल, ये फेज 2 तक चलेगा. सो प्लीज डू रिमेंबर इट इवन व्हेन यू कम बैक फॉर फेज 2, बिकॉज ये इशू रहने वाला है. इट्स अ परमानेंट इशू. ओके सर. ठीक है. ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक.
Okay. Chalo, let's take a break. Let's meet after 15 minutes. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. Yes.